with the reader section chapter number 4, that is A Little Bird Says. आज का हमारा चैप्टर का नेम क्या है स्टूडेंट्स? A Little Bird Says, and it is a poem written by Pranav and Smita Chakravarti. So students, let us start the chapter. A little bird sees ripe fruit on a tree and eats a tasty berry. The bird flies tall and the berry seed falls. Students, now a little bird has seen berry in a tree which was ripened, जो पक चुका होता है. स्टूडेंट्स, क्या होता है? एक छोटी सी चिड़िया को बेरी दिखता है एक ट्री में which was ripened. Ripened means ready to eat, खाने के लिए जो रेडी हो चुका होता है वो fruits. Okay, berry is a small rounded fruit which is very juicy to have. वो एक juicy fruit होता है जो rounded shape में होता है. Okay students, now that bird has seen, the small bird has seen a juicy fruit in a tree and ate that tasty berry. After that क्या करती है? That bird flew away. वो उड़ के चली जाती है high up, and ऊपर से क्या होता है कि जो round berry होता है, that berry, inside that berry there is a small seed. तो वो जब ऊपर high उड़ के जाती है तो what happen? वो seed को नीचे जमीन पे गिरा देती है. Okay? Now the rains have come. Hurry, let's run. Clouds, rain and sun. Our plant is born, a little one. After some time, what happens? कुछ दिनों के बाद क्या होता है students? It started to rain. क्या होता है? बारिश होने लगती है. Due to cloud, sun and rain, the seed which was fallen due to the बारिश, सन एंड ड्यू टू क्लाउड, जो बीज गिरा था, व्हाट हैपेंस, वो क्या करने लगता है? वो उगने लगता है. यू नो स्टूडेंट्स, अगर एक बीज में, एक सीड में आपका सन वाटर आ जाता है तो क्या होता है? दैट सीड स्टार्टेड टू ग्रो. तो वैसे ही क्या हुआ? वो सीड ग्रो करने लगा इन अ स्मॉल प्लांट. उस स्मॉल प्लांट के रूप में वो क्या करने लगा? स्टार्टेड टू बॉर्न. Now a tree with branches long, crows and birds song, crawling ants and spiders web, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty. Now what happens student? That small plant has grown into a tree with long branches. अब क्या होता है? वो छोटा सा पौधा था, अब वो क्या हो गया है? बड़ा ट्री बन चुका है with strong and long branches. You know branches, शाखाएं with long branches. The plant grown into a tree. Okay, अब उसमें क्या हो गया? Crow started to stay. Crow वहाँ पे रहने लगता है. Crow and other birds started to sing. वहाँ पे वो crow and bird क्या करने लगते हैं? गाना गाने लगते हैं. You know students, birds sing so well. उनकी आवाज जो होती है इतनी सुंदर होती है. उन्होंने स्टूडेंट्स then spiders had set their webs. स्पाइडर ने क्या किया? अपने जाल लगाना स्टार्ट कर दिया है. Ants started to crawl. Students, you know what does the meaning of crawl? Crawl का मतलब है walk using your hands and knees. जो छोटा बच्चा होता है, you know students, 6 and 7 months का baby, what they used to do? They use their hand and knees to walk. So crawl करना means रेंगना. Okay, so ants started to crawl and some caterpillars also can be seen with their tiny legs. You know students, caterpillar is a worm. Okay, वो कीड़ा होता है जो butterfly बाद में जाके क्या हो जाता है? butterfly बन जाता है. So caterpillar also can be seen with their tiny legs. Okay, and the trees had turned with green leaves all over. trees में क्या है? green leaves पूरा दिखने लगता है with lots of life. As I have said you, बहुत सारे insects, birds started to live there. वो वहाँ पे क्या करने लगते? रहने लगते. That means the tree is providing a life to all these animals and insects. Okay. Next, the tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. Now students, the tree have started giving fruits, of which some are very big and some are very small. अब क्या होता है? ट्री में फ्रूट लगना स्टार्ट हो जाता है. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है. And some children are saying, let's go and pluck them. चलो चल के उसको तोड़ लेते हैं. Pluck means तोड़ना, तोड़ लेते हैं. But remember, don't fall while plucking the fruit. फ्रूट को तोड़ते वक्त गिर मत जाना. So be careful of that. Okay. Now crows, birds, squirrels run and see the monkeys having fun. Now students, crow
take rest out here. Perch means to take rest. Okay, crow क्या करने लगता है यहाँ पे? Crow rest करता है. Squirrels keep on running up and down. Squirrels यानी कि उन्हें गिलहरी आपने देखा होगा, that keeps on running, कभी इधर कभी उधर, कभी पेड़ पे चढ़ना, कभी नीचे उतरना. So ऐसे keeps on running. Okay, and monkeys also have lots of fun in that tree. Monkey को आपने देखा होगा, tree में जब monkey होता है rather than in land, they do lots of fun. वो क्या करता है? झूलने लगते हैं अपने टेल को यूज करके. ओके, टेल से पकड़ते हैं ब्रांचेस को, देन दे स्टार्टेड स्विंगिंग आउट देयर एंड दे शेक द ट्री. तो इस तरीके से वो क्या करता है? दे डू लॉट्स ऑफ फन व्हाइल दे आर इन द ट्री. ओके, next, strong branches with pretty swings. A beautiful tree has so many things. Written by Pranav and Smita Chakravarti. Now students, the branches are so strong that they can hold a pretty swings. यानी कि branches इतना strong हो चुका है कि वो क्या कर सकता है? स्विंग्स मीन्स झूला, झूला को भी होल्ड कर सकता है. एंड झूले में हम क्या करते हैं? झूलते तो दे कैन होल्ड आवर वेट एज वेल. वो इंसान का वेट एज वेल एज झूला का वेट होल्ड कर सकता है. इतना स्ट्रॉन्ग है ये ब्रांचेस. ओके, सो विथ ऑल दिस थिंग्स, ये सारी चीजें, एनिमल्स, बर्ड्स, ओके, विथ इंसेक्ट्स, ऑल दिस थिंग्स, आवर ट्री इज वेरी मच ब्यूटीफुल. ओके, ट्री क्या करती है? ट्री क्या कर रहा है? दैट मीन्स द ट्री इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू सच ऑफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स. ओके, उनको क्या दे रहा है? वो शेल्टर दे रहा है. सो विथ ऑल दिस थिंग्स हमारा ट्री क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल है स्टूडेंट्स. एंड दिस इज रिलेटेड टू आवर रियल लाइफ एज वेल. ट्री अगर आप देखें तो क्या होता है? ट्री में बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, एज आई टोल्ड यू, स्क्वेरल्स रहते हैं, ओके, एंड्स, इंसेक्ट्स रहते हैं. सो दिस ऑल makes a tree very beautiful and attractive. Okay students, so this was our poem, a short poem by Pranav and Smita Chakravarti. So I hope you like this poem and इसको थोड़ा सा naturally भी observe it. एक tree को देखिए, you can see lots of insects, animals out there. So get some experience in real life also. Okay students, so have a good time students.